welcome back to my channel. I am Sakshi Singhania and I create videos on skincare, beauty, lifestyle and fashion. And today we are doing a Myntra haul. So I've been to Goa thrice in the last 8 to 12 months and I've bought a lot of beach dresses. So I thought why not do a haul on this so that when you go to a beach vacation next time you can take some of these outfits. Also these are all from Myntra, which means you will get it delivered very soon, and also there will be no problem in return and exchange. So yeah, let's get started with the first one. So the first one is this one side off shoulder dress. Now it looks like this. इसपे blue, green, yellow बहुत सारे prints हैं, and honestly I was not really sure when I bought this from Myntra, but when I wore this I loved it. It looks very pretty. In fact this is one of the dress जो आप सिर्फ गोवा में नहीं, you can also wear it in a nice brunch date or when you're going out with your girlfriends. It will be really nice, and the length of this dress is perfect. It's not too short, it's not too long, so it makes you look a little tall as well. And the material is very soft and I really love this outfit. Also it is very cheap. I will mention all the product links in the description box below. Next outfit is this long dress from Harshin box. Now this has got slit as well and it looks like this. इसमें ऐसे leaves बने हुए हैं which gives a Goa vibe, and इसमें सिर्फ strap है. The best part about this is the strap is adjustable. You can adjust these straps. And also इसका material तो बहुत ज़्यादा soft है. It is like velvety cottonish material. I also wore this with this orange shirt because गोवा में इतनी धूप होती है that you just want to wear something on top, otherwise you will get super tanned. So इस dress के साथ this orange shirt was going really well, and yeah, I really like this dress as well. I have worn this 3 या 4 बार. इनफैक्ट एक ही गोवा ट्रिप में मैंने ये 2 बार रिपीट भी किया था बिकॉज दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल. ऑल्सो दिस मेक्स अ रियली नाइस night outfit if you're going for a cozy yet thoda sa classy place, not shacks. Then this dress is something that you would like to go for. Next outfit is this black cord set. This has got a tube top like this and then it has the same pants as well. Plus इसमें एक belt भी है जो आप इसमें अपने bustier में अंदर डाल के and then you can just make a knot out of it and it looks really nice. Honestly ये तो मैंने एकदम last moment order किया था on my first Goa trip and it arrived 2 hours before I was leaving and I just had kept it in my bag कि अगर मुझे ये अच्छा लगा मैं रख लूँगी वरना I'll return it, and I loved it. I've worn this again thrice already. Just be careful because if you don't get this off your size this might slip, so make sure you pin it up properly. Otherwise I love the pants as well. Pants are very comfortable. आप इस pants को बाकी भी चीज़ों के साथ पहन सकते हो. But yeah, overall a really nice cord set. Next is one of my favorite outfits from this haul. It's this white outfit from the brand called Trendoil, and I love that this outfit has this crushed texture all over. Plus it has this lace on both the sides of the neck and also the sleeve. इसका थोड़ा overall look काफ्तान style है and it looks really nice. Although ये dress काफ़ी short है plus इसकी neck काफ़ी ज़्यादा deep है. So if you're not comfortable, just wear a nice bralette or a nice tube top like a white color tube top and you will be good to go. मैं 3 बार गोवा गई हूँ and मैंने तीनों बार इस outfit को पहना है because it is white in color, so it looks really nice and your pictures will also come really nice in this outfit. And at the back also this has got a knot, so in case this is falling off your shoulder you can just tie this up. In fact this brand called Trendoil, it's a brand from Turkey. So when I ordered this dress, ये dress मुझे 21-22 days के around deliver हुआ था and this literally was delivered from Turkey and I paid I think some 1900 or 2000 for this dress. This dress is very expensive, I know, but I love this outfit. Also I was not able to return it at all, तो मैंने पहन ही लिया and रख ही लिया. But yeah, if you're looking for a nice white outfit,
I think this is a really good one. Plus I have washed this already. 3 से 4 बार मैं इसे धो चुकी हूँ, that too in washing machine, and कुछ भी नहीं हुआ है इस ड्रेस को. इनफैक्ट इसका क्रश्ड मटेरियल इफेक्ट, आई डोंट इवन हैव टू आयरन दिस ड्रेस. दैट्स द बेस्ट पार्ट बिकॉज आई हेट आयरनिंग. सो या, आई रियली लाइक दिस ड्रेस. यू कैन गिव दिस वन ऑल्सो अ ट्राई. एंड द लास्ट आउटफिट इज दिस वेरी कैजुअल आउटफिट दैट आई जस्ट पुट टुगेदर. इसमें मैंने तीनों चीज़ें अलग अलग ब्रांड से ली है और मैंने इनको बहुत अलग अलग तरीके से भी पेयर किया है. इसमें जो बॉटम वेयर है, इट्स दिस निटेड बॉटम वेयर. ये फुल लेंथ बॉटम वेयर है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ कि इन्होंने यहाँ तक वाइट कलर की लाइनिंग दी हुई है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वॉट यू हैव टू वेयर अंडरनीथ. And this is the lining that they have given, so it is very comfortable. You can just wear your undergarments and then these pants and you will be good to go. Plus it comes in 2 colors. It comes in black and white as well, but I of course got the white one because बीचेस पे ना वाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. यू कैन वेयर दिस विथ एनी थिंग. द ओनली थिंग इज़ कि गोवा में इतनी गर्मी होती है एंड दिस निटेड पैंट्स मेक्स मी फील वेरी हॉट. काफ़ी स्वेटिंग भी होती है इसमें. बट इफ़ यू वेयर दिस इन अर्ली मॉर्निंग, अगर आप अर्ली मॉर्निंग बीचेस पे जा रहे हो, इट विल लुक रियली नाइस. अगेन मैंने इसको अपने तीनों गोवा ट्रिप पे पहना है बिकॉज आई लव दिस दैट मच. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस ऑरेंज शर्ट दैट आई गॉट रैंडमली फ्रॉम मिंत्रा. ऑनेस्टली मैंने बस एक शर्ट ऑर्डर कर दिया था बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग टू कवर माई सेल्फ अप वाइल आई एम राइडिंग द स्कूटी. सो या, आई लव दिस शर्ट बिकॉज एक तो कलर इसका काफ़ी प्यारा कलर है, बहुत ही अच्छा लग रहा था. आई डोंट have anything like this in my wardrobe, but when I wear this I feel nice. Plus it is cotton material, तो ये काफ़ी comfortable है. And the length of this shirt is perfect. It is neither too long nor too short. So even आप अगर इसके सारे buttons close करोगे, it looks really nice. But there is one downside. Major downside of this shirt is that इसको वॉश करते टाइम बहुत ज़्यादा कलर निकलता है. ऐसा लग रहा होता है मैंने बाल्टी में रसना मिला दिया हो. थैंक गॉड आई जस्ट फेल्ट कि मेरे को ये शर्ट अलग से धोना चाहिए. सो मैंने ये मशीन में नहीं डाला एंड आई वॉश्ड इट. हैंड वॉश किया था मैंने एंड ये भी मैं 3-4 बार धो चुकी हूँ. एंड एवरी टाइम आई वॉश बहुत कलर निकलता है. ऑनेस्टली आई वुड नॉट रियली रिकमेंड यू टू बाय दिस शर्ट, बट जस्ट इन केस यू एंड अप बाइंग दिस, 2 tips. First, do not wash it with any other cloth. प्लीज़ हैंड वॉश इट, वरना आपके सारे कपड़े बिगड़ जाएंगे. सेकेंड, इवन व्हेन यू आर ड्राइंग इट, प्लीज़ कीप योर अदर क्लॉथ्स थोड़े डिस्टेंस में. बिकॉज मेरे साथ ये भी हो चुका है. मैंने इसे सुखाया था एंड जस्ट उसके पीछे दूसरी चीज़ें सूख रही थी एंड इट हैपन टू टच दैट अ लिटिल एंड द अदर क्लॉथ ऑल्सो गॉट स्टेन्ड. So do not buy this, but in case you're buying it for the color and the length, then be very very careful. And the third thing is this tube top that I got. This is from the brand Hersheen Box. I think this brand does really nice tube tops. And मैंने पिछले मिंत्रा वीडियो में भी एक tube top दिखाया था and it's very very affordable. The best part is that it has this elastic, so it really sticks to your body and makes you feel comfortable. And yeah, that's it for the video. I hope you liked these beach dresses. Now let me know which one was your favorite and also let me know what would you like me to try next. And if you like this video, please don't forget to subscribe to my channel, hit the like button and the notification bell so that you get notified every single time I upload a video. And I will see you in my next video. Bye.